Assalamualaikum ji, welcome back to an episode of Kahe, Kazi. Faran Bhatti is back and he's trying to sell NFTs with morph code. We get to speaking about his foray into the metaverse, into hopefully one day having an event entirely in metaverse. Yes, sir. We also get to speaking about what he understands to be societal limiters that will have to now be removed for us to move forward, move into the future. And we spoke mostly about how he believes doing these events is a societal service more than anything else. Straight up. Yeah. Yeah. And also about how making money isn't a bad thing and everyone should be allowed to do it. I mean, I think everyone has right to be rich. Yeah. Everyone should be rich. Yeah. Anything else? Nest, nada. Ah, that's good. Allah Rahim karega. Enjoy. Assalamu alaikum. 3, 2, 1. Faran Bhatti. How you doing, Faran? I'm good. How are you? I'm sorted. Alhamdulillah. Man, You got me shirts, man. bro, of course. That's Morph. This is like one of its only kind right now. And there's an entire scene behind these clothes. Let me know. I'll explain it to you. Apparently, there's NFTs. Yeah, not just NFTs basically. This first volume is based around tourism of Asia. And in this volume, basically, I want to like make shirts, cool shirts. Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, ये वाली जितनी भी destinations हैं, उनकी जो major tourist spots हैं या कुछ उनका जो scene है, उनको मैं shirts, t-shirts में convert करना चाह रहा हूँ. I think that's dude. Yeah. That's a hefty goal. Yeah, and plus with Morph code, and I don't know if you know about the event that I was doing, Morph Karachi and Morph Lahore. So वो जो Morph series है, it's based around my brand launch, the one that you're wearing right now. So wait, that bleeds into this or this bleeds into that? Both together. what? So because I wanted an ecosystem for myself, you know, and the kind of expertise that I have, or I think I have basically, to you know, it's revolving around PR and stuff. Okay. So मैंने एक event form किया क्योंकि I'm good at event design skills as well, जो कि मेरे brand के around है और उस event का नाम भी Morph है. तो पहले जो कराची Morph पे what we did, we gave out laces, shoe laces to everyone who showed up. So उससे वो brand awareness हो गई कि oh, there's something coming. Morph Lahore पे हमने NFTs के through ticket selling करने की कोशिश की. That's interesting, dude. How did you manage that? Man, so basically we had Pink Circle there. So Pink Circle की 2 tickets और plus if you're buying that NFT, वो जो emblem है जो आपकी shirt पे यहाँ left पे है, अगर ये emblem वाला हमने एक NFT बनाया था और if you buy that, you get a autographed shirts from all the artists. And it's like a complete package that comes with it. That's awesome. A t-shirt and the autograph package. So yeah, I'm just trying to work around the future, which is now. Yeah. Which is the NFTs and crypto space and all those things. Yeah, just trying to branch out slowly and steady and see where it goes. Or agar apni capacity mein, it's nothing big right now, but the concept is pretty nice. I'm sure about the concept. And you know, it's the right time कि अगर हम इसको भी शुरू करें और इसको कहीं लेके जाएं. Because this अभी जो time चल रहा है, I think it's the beginning of the new era. It's the power change, shift change. अगर हम दुनिया में भी देख रहे हैं. Sure. तो you know, US से भी power shift हो रहा है. China ये वाले regions में, India tech wise हमने देखा है कि आखिरी 10 सालों में इंडिया ने टेक वाइज कितनी ग्रोथ कर लिया है और सारे मेजर जितने भी सोशल मीडिया सिलिकॉन वैली में इंडियन सीईओज बैठे हुए हैं. सो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ह्यूमंस राइट नाउ लाइक देयर रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड जो अच्छी पोजीशंस पे बैठ रहे हैं और वो इंडिया को एक एज दे रहा है पूरे एक सिस्टम के ऊपर. Sure. क्योंकि सारी नई अब जो फ्यूचर है इट्स ऑल AI टेक्नोलॉजी और इंडिया एक्सपोर्ट ही सॉफ्टवेयर कर रहा है. तो यू नो हम बॉयज़ कहाँ हैं पाकिस्तानी बॉयज़. हाँ, वो तो सही है, but I think what's interesting is, so all of that goes into, like, so you amalgamate all those thoughts and then come up with a brand basically. So I want this brand to be in Metaverse as well.
Oh, and I interesting. want this to be like a first Pakistani brand right now. I think कोई और नहीं कर रहा, शायद एक दो brands हैं. Rasta, maybe Rasta ने try Rasta किया. people are pretty quick too, Yeah, mashallah. So, because yeah. Rasta, I mean, their concepts and everything, and plus they've studied design and stuff. Yeah. And they're my friends. Huh. Or I haven't studied any fashion design and stuff. It's just I have designs in my mind, and I want to convert them into products. That's what I'm doing. Yeah, I think what's powerful about all this, and powerful about you generally, or at least something that I appreciate is, you always ask the why questions. Because how questions to, you could outsource the design. Yeah. And there's brilliant designers who you could pay. Yeah. And they could do this work for you. Yes, sir. It's no Yes, issue. sir. You know, Yeah. At Karachi is बारे में तो भरा हुआ है. But yeah, so Rasta's doing it. I think it's also interesting how willing you are to because it's risky technology. Absolutely. Abhi crypto, matlab, Crash. हाँ. There's a major crash क्या? Your government doesn't like it. वो भी तो एक मसला है. उस पर भी बात करते हैं. हाँ. बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा जब हम एक स्टेप आगे जा रहे होते हैं तो दुनिया कहीं और जा रही होती है. आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. बेसिकली वो टैक्सेस और फाइलिंग और कि इसमें से टैक्स कैसे लिया जा सकता है. बिकॉज अगर पूरा डिसेंट्रलाइज हो गई करेंसी लेकिन हम वी आर नॉट लुकिंग एट द बिगर गोल. We're not. So अब जैसे Indians, as I was just telling you, they're exporting their billionaires and stuff through their technology and they're taking over the world. तो हम छोटे छोटे मसलों में फंस रहे हैं, तो हम बड़े गोल्स को नहीं देख रहे. अगर पाकिस्तान से कोई भी ऐसा अभी तक कोई बिलियनियर कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है कि यंग ब्लड टेक वाइज कि उन्होंने NFTs में कुछ बनाया हो. And you know what's interesting? Yeah. One of the foremost authorities on the internet for NFTs is actually a Pakistani YouTuber. Oh, nice. Ramesh है ना? Yeah. You know? Sure. Like, I mean, think about these things, right? So it's not like, and ये बातें तो we've obviously heard to death कि potential बहुत है, but then like that's not enough anymore. Man, you so know? potential है, लेकिन potential तक भी बहुत सारे filters लगे हुए हैं. Hurdles. Yeah, and there's no support. Us as a society, अगर हम में से कोई काम करना चाह रहा है या किसी point पे पहुंचना चाह रहा है, point A से point B तक, तो कोई support करने के लिए majorly तैयार नहीं है. Like अगर जैसे for example आज मैं जैसे मतलब randomly before coming to you, I was watching Shark Tank जो उनका नया season आया हुआ है, the US version, ठीक है. I mean, the first woman who raised the investment of $200,000, उसका जो basic concept था, it was around hoodies. और hoodies में भी उसने क्या किया कि बस वो जो आप hood पहनते हो उसका अंदर वाला side उसने satin कर दिया था. So and the way she was trying to sell it कि इसको satin करने से आपका hair fall नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा. Yeah, it's good for your hair and good for your skin and stuff like that. And she raised $200,000 right there and then. मतलब the concept is so basic जो हमारे सारे brands they're working around these concepts और इससे ज़्यादा अच्छे concepts. लेकिन कोई भी हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, कोई बड़े investors इसमें इंजेक्ट करने को तैयार नहीं है. वो आज तक वही कि अच्छा पैसे हैं तो 15 करोड़ का प्लॉट ले लो और 10 करोड़ का प्लॉट ले लो. यही पैसे अगर ये लोग कन्वर्ट करके आज NFTs के स्कूल्स और बहुत सालों बाद पूरी दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हर चीज़ scratch से start हो रही है. Level playing field, yeah. So even for Pakistan right now, because I mean we all have phones, we all have access to the right information. It's just what we make out of that information. So bro, there's another very interesting. So Ramesh is obviously doing great work, educating, and he's also offering this stuff for free, by the way. Yeah. He's just like okay, free education, NFTs, जो भी है, आप लोग सीख लो, आप लोग कर लो काम. Also, there's another person, Sean Ansari. I don't know if you heard of him. Yeah. Unreal Engine. Reality Forge is his organization, and they're doing good work in training people. Yeah. So they can like build in the metaverse, essentially, with the Unreal Engine. Kya ho gaya? Oh. You good now? Yeah, perfect. Everything in your lap now, man? Perfect. Last time, मैं बता रहा था, last time I... Smoke engine. Bro, Smoke Engine. Bro, can that be turned into a brand? Smoke Engine. You are the brand. Yeah. Smoke. I am the Smoke Engine. Faran Smoke Engine Bhatti. And anyways, so it's just the stress. La rehm kaya, bro. So okay. Tell me about the brand.
What's the name? So it's called Morph Code. Morph Code. Okay, Yeah. is the brand. Okay. Yeah, so Morph ke, with the name Morph Code, we're doing concert series all over Pakistan, which is The Karachi was brilliant. Thank you. The Lahore had criticism, but also was good. Just 1-2 of them. If there were 1,700 people there, अगर किसी 3 को मसला हो रहा है या 5 को मसला हो रहा है या You can live with that, you think? and not live with that. I'm ready to take that criticism and see कोई भी system perfect नहीं हो सकता. No. And पाकिस्तान जैसी market में जहाँ concert culture को बहुत अलग तरह define किया गया है और with Morph, I'm trying to build another type of concert series. Basically, with Morph Code, I mean, we're not targeting 15,000 or 17,000 people at the same time. Sure. Because it's pretty risky right now because our audience is not that educated कि उनको एक बड़े system में अगर आप डाल दिया जाए तो वो act एक certain way में आपको करना होता है लोगों के सामने चीज़ों के सामने you have to like make sure कि you know सबकी space बराबर है इंसानों की तरह नहीं behave करते लोग. exactly. Is that what you're saying? तो अब How dare जैसे you? अभी भी आप देखें तो एक सेकेंड अभी भी can I make this one text? Oh, sure. Okay. Very professional, huh? None of this will be cut, by the way, because I have other people to talk to. If I didn't have other people to talk to, then this will be cut. There's other people in the studio. They don't have a mic, so I guess you guys could say whatever and it'd be fine, right? और आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? So yeah, I'm back. Oh, all right. Hello. that didn't last long at all. My bad. It's okay, dude. Important work. It's okay. It's okay. So At 11:30 man, PM? I mean the kind of stuff that I do. Midnight. So I have to be active all day long because I'm in touch with a lot of people, and वो ये Morph Code This अलग. can't be healthy, bro. Man, it's not right now. but eventually, Inshallah, I'll be rich, Yeah. Kazi. It's not just about being rich. It's about whatever I've dreamed of. I want like that to take shape. Or because of course आपके जब ख्वाब बिल्कुल इतने ऊपर होते हैं और आपके पास वो एक क्वेश्चन नहीं होता और वहाँ तक आने के लिए you have to hustle throughout. तो I'm all in for that. That's Yes. dude. Very impressive. Yeah. Very so cool. that's just it. Like Allah my khair kare. entire run right now, I know okay, I've come a long way. Uh-huh. Mashallah, Alhamdulillah. mashallah. And there's a long way to go. And जिस तरह के मेरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मॉर्फ कोड ही मैं आपको बता रहा था कि इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सर्ट सीरीज़. अगर आपने नोटिस किया हो कि पाकिस्तान में मेरे जब से मैं पैदा हुआ हूँ या मैंने अपने सामने ये होते हुए नहीं देखा कि कॉन्सर्ट सीरीज़ अपने सेल्फ फंडेड सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रैवल करी हो एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर. ठीक है. और वो I'm not aware of it. या लाइक एक फेस्टिवल होता है सॉलिस. ठीक है. बट सॉलिस इज सुपर फंडेड. यू नो देयर बिग ब्रांड्स इन्वॉल्व विद सॉलिस एंड यू नो जो बॉयज़ वो कर रहे हैं सॉलिस बेसिकली दे डू बिग फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दे पाकिस्तानी बॉयज़ बट बेस्ड इन दुबई एंड टोरंटो आई थिंक. और वो लोग अल्ट्रा भी कर रहे हैं. उन्होंने अभी दुबई में मार्टिन गैरिक्स का कॉन्सर्ट किया है. सो दे नो द सिस्टम एंड दे नो हाउ टू वर्क अराउंड इट. फॉर समवन लाइक मी, I start from scratch. I had to learn all that in order to get here. So, you know. That and also because you grew up here, there's also that added taboo कि ये चीज़ तो नहीं करनी होती है ना. Absolutely. For them, if they were born and grew up in Dubai or Toronto, there is at least that. There's a system in place, you know, which actually, I mean, जैसे we all know about that Fire Festival. You know, if you see the documentary, the money they raise through that festival is crazy. Is कौन सा वाला? Fire Festival, the greatest party that never happened. Oh, dude, yeah, and they didn't throw it, no? Yeah, so they raised more than $100 million. And then left. And then left. I mean, so they didn't. So they were there. Basically, their problem was they couldn't execute what they promised. You know, that's a major problem. अगर इंसान सोच तो ले कुछ भी दिमाग में, उसको execute करना जिस तरह आपने सोचा हुआ है is the biggest task, right? Yeah, but that's the thing. That's what I wanted to talk to you about also. I was at Morph Code Karachi, right? And you were unconscious on your feet. Like, there's just so much that goes into this stuff. Yeah, man, it's so. अगर if you still Google कि दुनिया की सबसे ज़्यादा stressful jobs, so event management is on the number 4. And then PR again, ये system मुझे अकेले ने carry करना था एक certain point तक कि क्योंकि vision मेरा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था. सब समझ रहे थे वही concert है, वही basic सा stage लगेगा, वही basic चीज़ें होंगी.
तो सबको समझाने में और यहाँ तक आने में, वो PR क्रिएट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मतलब लोगों को लगता है ये पार्टी हो रही है, लेकिन आप सोचें there's so much at risk, so much at stake in that one day, कि अगर if one of you decide to like flip in at one certain point, that's your problem. That's your exactly, problem. और अब मेरे कॉन्सर्ट में जहाँ 1200-1500 लोग आ रहे हैं, उनमें से एक भी फ्लिप हो गया और उसने कोई हरकत कर दी, it's gonna come on me. But I don't understand why, because दुनिया भर में इस तरह नहीं होता. So bro, exactly. So मैं यही बता रहा हूँ कि 15,000 लोग, 17,000 लोग जमा करना is not a problem. To execute it right, whatever your vision is, what you can do is you can do it for the limited number of people. ठीक है, set a bar, लेकिन आप ये experience उनको दो जो सोसाइटी में इसको आगे बढ़ा सकें, कि you know what I'm saying? Sure. कि 17,000 लोग अगर खड़े हुए ना, तो 3,000 लोगों के पीछे सिर्फ मस्ती हो रही है, तो आपके मसले बड़े हुए हैं कि कोई खुदा न खास्ता किसी को हरास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक सर्टेन वे में एक्ट कर रहा है, तो वो सारा इट्स गोना रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू. So here's what it is, na? So I'll try to describe it the best I can. Just watching you arrange for the VIP accesses, because that you have to do that. The security, absolutely, for the whole thing, to make sure that no one gets in without a ticket. Absolutely. To make sure that no one is harassed, no one is disrespected. Disrespect का भी बहुत बड़ा सीन है, बेइज्जती का भी बड़ा मसला है ना पाकिस्तान है ना ब्रो. बहुत बड़ा ईगो छोटी है हमारी, और फॉरेन से अब 10 लोग लेके आ गए. Exactly. और आपने तबाह कर दिया जो सालों से खड़ा हुआ है. Exactly. And amongst all of that, I remember कराची वाले में हुआ था, the VIP canopies were just that. They were canopies not meant to be danced on. उस सब के बीच में there were a few people that danced on one of those canopies and damaged it. Container वाला. And even that was your problem. Straight Dude, up. That's a lot, man. Exactly. And plus मतलब लोग आके comment करके या कुछ भी instant समझ रहे हैं कि करना आसान है, लेकिन अच्छा, that being one, again, as I was just telling you कि that has never happened, कि एक series travel कर रही है on its own. And by the way, so Eventum as a platform, all the modern अभी जो पिछले 7 महीने में music revolution that you see, alhamdulillah, वो अकेले एक curate हुआ है एक Eventum platform से. So all these new artists, Hassan, Manu, Tahaji, you know what I'm saying? Okay, that's and then Talal Qureshi, Talal, all of them, ठीक है, they've been working on their product since the longest time. So आप audience के साथ interact तब करते हो जब आपको बड़े-बड़े concerts मिलते हैं. Sure. So for me to arrange the right audience for them and the right experience for them, so this entire new event wave started after Hunzaverse, ठीक है. Now Hassan, mashallah, in 8 months, in 9 months since Juna, और अभी वो माशाल्लाह जहाँ खड़ा हुआ है, that's ridiculous. So that's, he's working for Coke Studio. So Coke Studio ने, I'm sure he saw one like concert से ही बंदा grow कर रहा होता है. So setting everything right for the artist, for the people, for myself, like putting everything in place, it's just crazy amount of work. But alhamdulillah, I can take the stress, and it's what I've envisioned all my life. So agar to see it happening, to do it right, that's the goal. But also then, do you not consider कि जिस तरीके से आप the way you're thinking about it, where it's not just the thing that you're doing for money, but it's you एक तरीके से I'm developing a community. And you're developing a community, and from what I'm hearing, you owe these people, these artists के इनके लिए आप करो. तो फिर तो bro, as long as you have a why, you can get through anyhow, ना? Frederick Nietzsche ने बोला था. Yeah, true. नीचे ने बोला था, तो उसका मतलब ये नहीं लकीर पे फकीर है. Man, so वक्त एक सोसाइटी में अगर ये फिक्स बैठ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी सोसाइटी में वो इतना ही फिक्स बैठा है. Sure. पाकिस्तान एज अ कंट्री, we've been through a lot. मैं और आप और हम जो कराची में रहता है, हमें पता है कि हम सिविल वॉर में बड़े हुए थे, प्रॉपर सिविल वॉर में. Did you see MQM come अभी recently I just heard the phrase MQM and I'm like no. throwback आ गया हमें so हम उस माशरे में बड़े हुए हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट था ही नहीं, और जो था भी वो इतना क्वालिटी नहीं था कि आप सेफ फील करें वहाँ पे जाके, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं. What I am creating is basically not a massive party. I want to create a system for families, for my family as well,
कि you know I want my father, I want my mother, my sister, all of them coming down there and having a good time, कि वो टेंशन नहीं हो रही हो कि अच्छा खुदा ना खास्ता कि कोई हाथ मार के चला जाएगा, you know what I'm saying? So Morph यही सबसे बड़ा niche है मेरा इस वक्त माशाल्लाह कि whatever events I'm creating, तो for women as well, for families as well, it's a safe space. Yeah, they can come enjoy the concert. And also I'm not doing concerts, I'm doing shows. So my show जैसे Morph Karachi had 10 artists. Generally concert 2-2.5 घंटे का होता है, मेरा शो 10 घंटे चला है. मतलब एक पूरा समझ रहे हैं कि वो क्यूरेट हुआ हुआ है लाइनअप के हिसाब से कि अच्छा शुरू का BPM ये है, बात का ये है, बात का ये है. I understand that, dude, but here's my question, right? And again, like I said, मैं लाहौर वाले पे था नहीं, लेकिन कराची वाला was by far one of the best concerts I've ever been to. And but that's not saying a lot. I haven't been to a lot of concerts, but I have experienced a lot of events, and as an event, it was well run. I mean, I didn't like seeing you like that at all because I care about you, and I was like, this dude's done right now. But so that I suppose is the question. Then the question is, at what point, because you've not even crossed 30. At what point does this become too much for because you have a finite amount of cognitive capital? At what point do you realize कि यार ये तो sustainable नहीं है, and then surround yourself with a team, because there's no other way, bro. I mean, I understand you can't trust people. Karachi hai, दुनिया झूठी है, लोग लुटेरे हैं, गाना है, लेकिन जो है, at what point do you and are you looking? Is it difficult to find a good team? Man, it has been a difficult task, but now I have surrounded myself with the right people. So, are you saying that because these guys are here? No, I've been saying this everywhere now, mashallah. So, I mean, again, as I was telling you, it was my vision. वो किसी को ट्रांसलेट करके बताना कि ओ दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई नीड कैपिटल फॉर, और तुम्हें ये करना है, इस तरह करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले हुआ नहीं है. अगर हुआ भी है तो वो बहुत पर्सनल कैपेसिटी में हुआ है कि वो बड़े स्केल पे कभी एक्सपैंड नहीं हुआ. समझ रहे हैं कि but I think again I will continue to highlight this. There is a communal paradigm to this thing that's not existed before, no? Where you're like, okay, even if I don't make the most amount of profit, is Hassan happy? Is Talal happy? Is Manu happy? Is Tahaji good? Are these people happy? और बहुत सारे थे जो अभी Faris obviously, और बहुत सारे थे जो मैं अभी भूल रहा हूँ. Is Misha good? Are these people happy to perform? Are they good? Are they sorted? If they're good, I can take a hit. Absolutely. You know? So I mean, alhamdulillah, I'm lucky. I can say that I have. So all of these artists that you took names of, they're my friends. Alhamdulillah. And they kind of trust me with this because again, I've proved myself enough, mashallah. Proof of concept, yes. You know, now they are pretty like comfortable around my space as well. Like I've seen them performing at other concerts as well, and they act in a certain way because they're celebrities. But the best thing about Morph or Eventum, my platform, कि if you're coming down to that concert, तो वो जो एक artist और audience का वो जो filter है, वो भी बहुत कम हुआ हुआ है. So you can interact with your favorite artist, you can chill down, you can have a talk, कुछ भी. तो मतलब वो हम filters भी ख़त्म कर रहे हैं audience और वो artist खुद भी comfortable होता है. Bro, you know what I want to see now? I want to see the stunners. I'm working around. Okay. Don't say anything else. Nazar lagti hai. Allah raham karega inshallah. I'm working around. Yeah, dude. Because I was again, I haven't experienced a lot of concerts, right? But I was so happy to see Faris, especially. Faris वैसे भी I suppose interacts with the crowd. I don't know. But he like literally आखिर में he was just talking to them, na? And I think Hassan same thing. Comfortable setting पे बैठ के enjoying himself. That was beautiful. I think that was truly beautiful. And then, you know, he also dedicated his last performance to a fan of his who passed away. Allah Rahm Kare. I think overall, and I've said this, and I don't know, I suppose I've said this to death. I've said this about जो छोटे वाले rappers हैं ना, youngsters के नीचे जो आ रहे हैं, बोल जानी वगैरह, उन लोगों के भी मैं बोलता हूँ. But even for this event, it was wholesome. खुदा ना खास्ता ऐसा कोई scene नहीं था कि that's the goal. You know, हमेशा से goal ही रहा है to keep it as wholesome as I मतलब जो max capacity पे जितना
मैं उसको safe और sound कर सकता हूँ. This is what I do. Bro, people showing up And- drunk cannot be something that can be put on your feet. And also, that's why I'm like, on the day of the event, I'm losing shit Yeah. because there's so much pressure कि for कि artists भी मेरे दोस्त हैं, खुदा ना खास्ता अगर नहीं, अल्लाह उनको रहम बुरा करे. ना experience हो. Yeah. And people who show up majorly, they know me in any capacity, left, right, center. हम सब कहीं ना कहीं किसी कराची एक छोटा सा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं. That's never been said on this podcast before. कराची छोटा सा शहर है. दुनिया बहुत छोटी हो गई है because of phones Yes. and because of Instagram, because direct access towards your artist, everything is on your phone right now. Sure. तो उस हिसाब से देखें तो बहुत अब interactions इस तरह हो रही हैं कि आप एक थर्ड पर्सन में किसी को जानते हैं, सब एक्सेस में आ गए हैं. सही. सो मतलब वी आर Well said, man. या हम फ्यूचर में ही हैं. आज से 15 साल पहले कोई भी नहीं सोचता था. एक कम्युनिटी होती थी लेकिन वो पड़ोस ही पड़ोस था बस. उसके अलावा Spoken like the son of a famous writer. थैंक यू. ये इसको बोलते हैं reference bro. कभी कभी मैं कर लेता हूँ. बट नाउ आई मीन फोन्स एंड टेक्नोलॉजी, अब हम कहीं और जा रहे हैं. मतलब आप देख रहे हैं कि आप यू कैन जस्ट मेक मनी आउट ऑफ NFTs और आप एक आर्ट बना रहे हो. इंसान के हमारे वालिदैन की सारी ज़िंदगी गुजर गई मेहनत कर करके एक वो हमें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें. हाँ. और अब ये है. Bro, and the thing You is, just have to be very smart about it. smart and quick though, and I've said this to you before. There's lots of people that are so obviously हमारे वालिदैन के जो उम्र के हैं, they have a difficult time wrapping their heads around cryptocurrency because it's non-tangent. Straight up. It's not tangible, right? NFTs again not tangible. Yeah. So Faran, you're telling me you're going to sell impressions of a real thing on the internet? People are going to pay you for it. Apparently, they're going to pay you lots. Actually, Yeah. right? But there's lots of people that are our age, yours and mine, who just won't move. I am guilty of this. Yeah. I am slow to move, right? And I think that again must be applauded. Ki you're just so willing to take this risk. Ki it's not. The conventions haven't been established. It is not a settled technology. It's just not. यही बात है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी मास्टर हो रही है और अगर इफ़ वी गेट द जिस्ट ऑफ इट, Yeah. तो फ्यूचर में मतलब वो ये टेक्नोलॉजी जितना भी इवॉल्व होगी तो it'll be easy to like get in hands on. Oh, 100%, dude. Yeah, अगर of हम course. अभी सीखेंगे तो मतलब अभी भी हम बिल्कुल we're at the start of this entire scene. Yeah. If you do this right and जब दुनिया शिफ्ट हो रही है दूसरी तरफ, मेटा अब मतलब किसी ने नहीं सोचे थे ये कॉन्सेप्ट्स, अगर ये हो रहा है और हम सबके पास वही फ़ोन्स हैं जो फ़ोन्स सिलिकॉन वैली में सबके पास हैं, हमारे पास भी वो सारा एक्सेस मौजूद है. इंटरनेट हर किसी के पास है. इट्स जस्ट व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर टाइम. That's it, dude. तो आप क्या सर्च कर रहे हो. अगर जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को बैठे हुए मैं आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू पाकिस्तानी कंटेंट, तो Okay. एक चैनल है कराची बेस्ड ही चैनल है, और अब इंडिया में शार्क टैंक आ गया officially, and they're like they're investing, injecting crazy money Sure. into their startups. Sure. और मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे एक कंटेंट देख रहा था कि 2 टीम्स बनी हुई हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, और वो ऑफिशियली उनके चैनल पे ही अपलोड हुआ था और उस पर क्लिक बेट ये लिखा हुआ था, फलाने ने फलानी के साथ लाइव टीवी शो पे ब्रेकअप कर दिया, और ये और वो वायरल हो गया है अभी. सो अगर हम इधर घूम रहे हैं तो दुनिया कहाँ चली गई है. और हम अभी एक मूवी भी बैन हुई है ना ब्रो. हाँ, जावेद Again, the thing is, you are giving no stimulus to any kind of business for coming to you and doing anything legitimately. Absolutely. So you are giving. There is incentive for people to come do illegitimate businesses here. मार्केट तो मार्केट होती है ना ब्रो. आई थिंक वही वाला ये जो लाइन है कि इट्स अ लेजिटिमेट बिजनेस और इट्स नॉट, वो लाइन भी बड़ी वेग सी है. अब फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो फॉर एग्जांपल, अब वो पूरी दुनिया अडेप्ट कर रही है. Yeah. Like I was just reading कि Biden government भी is trying to like make like crypto को officially कुछ they're trying to like make it very substantial ताकि वो इकोनॉमी में सही तरह से आ रही हो. और हम on the other hand हम लोग कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं आज तक. cause for example TikTok,
You know, TikTok एक गोरे अभी तक गोरे बैन होके नहीं हुआ ब्रो. और वो गोरों का टिकटॉक आप देखें और आप हमारा मतलब गोरा कंटेंट जो द काइंड ऑफ कंटेंट दे वर्किंग ऑन. Yeah. फॉर एग्जांपल एक मैं टिकटॉक की केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें एक लड़की को ऑफिशियली टिकटॉक ने हायर किया एज देयर कम्युनिटी और कैंपेन मैनेजर. उसने अपने पूरे टिकटॉक अकाउंट को सीवी बनाई हुई अपनी. Wow, dude. सो शी Yes. यस सर. Yes. सो अब हमारा उस पर आपने वो देखा है कि वो ब्रिक्स फेंक रहे हैं और वो लड़ रहे हैं धड़ धड़ और Bro, I think so. Okay. So पैसे बन रहे हैं. आई गेट इट कि there's absolutely a fracture in our societal psyche, right? There's all sorts of cognitive dissonance, and I think that's what this is. कि एक तरफ obviously we want to make money, Yeah. but we also think that we're the best. पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह ही नहीं है, bro. अगर पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है, how do you hope to improve anything, right? Load shedding. Why is load shedding a thing? Man, abhi right now we're like at this point कि ये जितनी भी ये फिज़िकल बाउंड्रीज़ हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये मैटर करती हैं इतनी ज़्यादा. क्योंकि आप देखें किसी भी एक सक्सेसफुल इकानमी में फॉर एग्जांपल चाइना एक्सपोर्ट्स के थ्रू पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है. Yeah. ठीक है, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्व्स डाउन. हालांकि जो वहाँ सिस्टम है कम्युनिज्म का और ये वो बहुत अपना कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है. ठीक है, लेकिन वो होने के बावजूद इस वक्त दुनिया की सारी एक्सपोर्ट्स, रियल स्टेट, हर जगह को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है. And also, here's the other thing, right? There's markets that they've taken over that disagree with that system. Yeah. But they can't help it, man. Why? Because excellence is excellence. Yeah, Unfortunately, that's what it is. एंड यू नो लाइक अडेप्ट करना एट द राइट टाइम्स. एक आपकी कंट्री की पॉलिसी सही है, एक आपकी अपनी नेशनलिज्म बेस्ट चीज़ होती है, लेकिन उस कंट्री को अगर इफ़ यू हैव टू टेक इट टू अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ कि ये वो मैटर भी तो करे ना. अब Yeah. जैसे हमारा पासपोर्ट इज़ द 4th worst passport ever. Yeah. So मतलब with this kind of image in like throughout, हम किस तरह एक्सेल करेंगे कि हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं है, हम हम एक दूसरे को ओन करने के लिए तैयार नहीं हम है, bro. अभी भी सब एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं. Yes. और जहाँ दुनिया अलग एक टैंजेंट पे जा रही है और हम अभी भी उधर फंसे हुए हैं, तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ सैड. It is. It's upsetting. But listen, so I do want to ask you this because there's a lot of people that hate on you, right? You think you're a patriot? You love so you're not ever are you ever considering leaving Pakistan for good? Man, so again, I don't believe in the boundaries. Okay. समझ रहे हैं कि for me, Pakistan is super blessed with all the right resources. Yes. And I would want to run business there. And Yes. plus, it's the emerging market. If we do things right now, the kind of potential, the kind of resources we have, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. Because हमारे पास जो पूरा, फॉर एग्जाम्पल द वेदर इन पाकिस्तान, इट्स सो परफेक्ट टू डू बिजनेस एट एनी टाइम ऑफ द गिवन ईयर. कि मतलब आपको जैसे इफ़ यू वर्किंग लेट्स इन रशिया, तो आप सर्दियों में आप बंद होके रह गए सर्दियों में. हम फिर अगर साउथ में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे पास सर्दियाँ भी फिट हैं, गर्मियाँ भी फिट हैं, बेरेबल हैं, तेज़ इंटेंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेजर नुकसान हो सकता है. इफ़ यू हैव रिसोर्सेज यू कैन सर्वाइव थ्रू इट. और कराची 3 करोड़ लोगों की आबादी है, वी ऑलवेज सर्वाइव थ्रू इट. और हम तो ये हम, और प्लस फिर हमारे पास पहाड़ बहुत क्रेजी हैं हमारे पास. पहाड़ों का तो आपके साथ खास ताल्लुक है. फिर बलूचिस्तान भी है. बलूचिस्तान इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज. इट जस्ट वी हैव क्रेजी रिसोर्सेज. एंड देन टेक वाइज भी हमारी रिसोर्सेज सस्ती हैं. जो पूरा टेक मार्केट इंडिया तोड़ के जा रहा है या फिलीपींस तोड़ के जा रहा है, पाकिस्तानीज़ भी आने की कोशिश कर रहे होते हैं. दे ट्राइंग टू गेट देयर. तो अगर हम अपनी थोड़ी सी चीज़ें फ़िक्स कर लें ना, आई थिंक हमारे पास पूरी दुनिया का सेंटर है. हमारे पास रिसोर्सेज भी फिट हैं, दिमाग भी अच्छे हैं हमारे. ऐसा नहीं है कि हम गए गुजरे हैं. हमारा दिमाग बहुत, मतलब पाकिस्तानियों का दिमाग बहुत चलता है. ब्रो कहाँ चलता है? इस पे टिकटॉक पे चलता है, ब्रेकअप पे चलता है. मतलब देखें, वो भी चल रहा है ना कहीं, तो बस उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है. I think perspective तो चेंज कर लो, but I think I'm going to go out on a tangent and think DNA alter करते हैं. No bro, DNA alter मुश्किल है. I think what you can do, listen, what we need to do is just tell everyone, just sell them
कि ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला सारा सीन है ना, it's one big breakup story and then they're gonna be like on it, man. I think then they're gonna, किसने I'm being Bitcoin का दिल pretentious, तोड़ा? obviously I'm being pretentious, but I'm just so frustrated by all this stuff, man, especially when आप अभी भी YouTube पे ट्रेंडिंग पे चले जाओ, आप देखो क्या चल रहा है. I'm sure but अब वही वाली बात है कि किसी ना किसी ने तो ये चेंज करना है. Bro, absolutely. So Yeah, we're still here, I alhamdulillah. mean, Yeah. you know, despite all the criticism that I got for Hunzaverse, I pulled off Morph Karachi. You Alhamdulillah. know, then I pulled off Morph Lahore, and I explained my point to the people कि we can have this healthy entertainment system जिसमें आप एक दिन निकाल के आओ और आप सुकून से वो जो आपका पूरा 10 महीने गुजर रहे हैं, अगर उनमें से आप एक दिन आके if you're having a good time, that's super, like it's okay. That's awesome, dude. Yeah, that's okay. Yeah. Like you should, मतलब ये बहुत अच्छा काम है, ये Yeah. डार्क काम नहीं है जिस तरह आप बना रहे हो या दिमाग में सोच रहे होते हो. Bro, but the thing is, we make everything a taboo, na? Abhi, there's brilliant dancers in Pakistan, Karachi based. Yeah. You and I might know them. That get threats on Instagram. Dude, Man, आपका क्या जा रहा है? वो जो भी कर रही है या कर रहा है, आपका क्या जा रहा है? मसला यही है ना कि हम अपने गिरबान में झांकते ही नहीं है और दूसरों को बस हमें नीचे करना है कि नहीं वो, जैसे वही वाली बात है कि आप इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी है, प्यार मोहब्बत और इश्क और ये हर किसी ने करना है, हर किसी को दे वांट देयर गर्लफ्रेंड्स, दे वांट दिस एंड दैट फॉर देम, लेकिन कभी भी पब्लिकली किसी को करते हुए देख रहे हैं ना तो वो बोलते हैं वो देखो क्या कर रहा है. हाँ. और वो फिर उसको मारने की और अजीब सी, लेकिन करना सबने खुद भी है. हाँ. और लेकिन किसी को करने भी नहीं देना, लेकिन मानना खुद भी नहीं घर कि जाके करना भी है. करना है. तो कंफ्यूज्ड है हम लोग, Confused तो हैं bro. कंफ्यूज्ड है काफ़ी Confused तो हैं. कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बबल लें और क्या Yeah. चल रहा है. Anyhow, coming back to the can I call this, is this a brand? Can I call it apparel? It's a 360 brand. It's not just apparel brand. Okay. So we're making shoelaces. Okay. We're making grills for the rappers. Apparently these pants are also. Yeah, so we Okay, make, morph and then we plan on making our, you know, it's a 360 thing. Okay, I Okay. want my fragrances and I want my, it should be an entire system. Like Okay. वो एक चीज ना हो, सिर्फ कपड़े ना हो, पूरा Okay. lifestyle brand हो. Okay. Now let's work towards a cohesive understanding of what your vision is towards this. So I can order a shirt, for instance, जब live हो, Yeah. through the website, Yeah. Instagram, whatever. NFT का क्या सीन है इसमें? अच्छा, so again हम अपने कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं और कॉन्सर्ट के थ्रू वी हैव फेमस आर्टिस्ट कमिंग इन, सो थ्रू दैट वी कैन सेल आवर NFTs as well, you know, because वो NFTs के लिए यू हैव टू हैव अ कम्युनिटी और आपका डिस्कॉर्ड पे ये हो और वो हो, फेमस नाम आपके साथ जुड़े हुए हो, तो मतलब देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू, क्योंकि जितना भी NFT बेस्ड मॉडल है वो भी कम्युनिटी बेस्ड है, इंटरनेट कम्युनिटी बेस्ड. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट काइंड ऑफ पीपल विद वर्किंग फॉर यू. सो आई कैन सी अ एंटायर सिस्टम जिसमें मैं इवेंट्स करवा रहा हूँ. आई हैव ऑल दी आर्टिस्ट कमिंग इन एंड दे गेटिंग नाइस ऑडियंस, तो वो आर्टिस्ट भी खुश है, ऑडियंस भी खुश है, एंड उसके थ्रू आई कैन क्रिएट माई ओन ब्रांड इज़ वेल, द वन दैट यू वेयरिंग, सो वी कैन सेल इट टू द राइट ऑडियंस दुनिया में जहाँ पे भी है. तो एक पूरा 360 सिस्टम है. So eventually do you think there will be a time when I could buy this with Ethereum or some kind of cryptocurrency? Yes sir, that's the goal actually, that's the future. कि ये जैसे अगर आप NFT buy कर रहे हो अभी भी, if you're buying NFT, so you're buying it through Ethereum, right? Yeah, there's no other way. Yeah. And like this is the plan कि ये Metaverse में भी हो ये ब्रांड, कि you know अगर आपने sleeves खरीदनी है, let's say PUBG की, let's say किसी भी चीज़ की, Metaverse पे हमारा एक अपना virtual store हो, हाँ. जिस पे हम अपनी पूरी 360 lifestyle की वो पूरी चीज़ें रखी हुई हो, Yeah. so you can buy it for your meta world. Yeah. So that's the goal. So there could be a morph code concert in the metaverse entirely. Straight up. Do you realize how ridiculous we sound right now, bro? Man. Yeah, I was born in the 90s, in the early 1990s, dude. Like, what the fuck is going on here? I think, you know, वही वाली बात है, मैं अडेप्ट करना पड़ेगा ASAP से. Yeah. और अगर चे, you know, वही, so let me make it very easy. Yeah. So जो कोविड टाइम्स आए थे हमारे पास, बेसिकली यू नो यू डू रियलाइज कि पूरी दुनिया स्क्रैच पे आ गई थी, ठीक है? Okay. और पूरी दुनिया के पास इस बार पहली दफ़ा इक्वल
वसाइल थे किसी ना किसी हद तक in terms of phone and technology or access to the information. तो हम it's a great opportunity for third world countries right now कि वो अपनी strengths को पकड़े, ठीक है, Yeah. और अपनी cheap labor, cheap resources, tech wise ये चीज़ें assemble करना शुरू करें और उसको दुनिया में फेंकें, क्योंकि US में भी उतना ही financial, इनफैक्ट बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड को ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड से, क्योंकि हम तो हैं ही थर्ड वर्ल्ड, हमारा तो वैसे ही नुकसान चल रहा है। और ब्रो हम SOPs भी नहीं फॉलो करते सही तरीके से, हम सीधी बात चल है रहा था, हाँ. फिर सीन ऑन था हाँ पूरे bro, लॉकडाउन everything में। was happening dude, that's Yeah. what it is. So I recently had a friend visit from Canada. Okay. Right, and as we know, Toronto has or Ontario, all of Ontario I think has gone back under lockdown and will be the lockdown will be lifted I think in the next 2 weeks ऐसा कोई scene है at the recording of this thing. It is the 30th of January. The friend went, यहाँ पे आया दोस्त नज़र यहाँ पे आया and he's just like ये क्या हो रहा है लॉक मतलब कोरोना. I'm like हाँ bro है, कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है, but like so indoor dining is off again. Yeah. But I think people just can't afford, people have realized they just can't afford to go under lockdown anymore, man. It's just too many businesses shut down. Yeah, it's Actual intense. businesses actually shut down, man, because तो बड़े वाले जो business है वो तो चलो shut down नहीं कहेंगे. So Domino's is good, right? And I love Domino's, by the way. I think I might have some Domino's right after Let's this. do. But जो है वो, but the small shops, right? The mom and pops, right? Yeah. आपका वो Italia is a brilliant store in Yeah. Mohammad Ali Society. Wood fire brick oven pizza, wonderful, right? Almost came close to shutting down, man. But in the lockdown. Okay, so you're giving me example of this one restaurant, Yeah. but on the other hand, because of online platforms like Food Panda and stuff like that, तो बहुत सारे businesses flourish भी हो रहे हैं लॉकडाउन के बीच में ही. Sure. It's just how you sell it. Sure. ये इतनी opportunities पहले किसी पाकिस्तान में कभी आई भी नहीं थी. For example, Yeah. करीम. Sure. So करीम में जैसे अब ड्राइवर्स हैं, अब ड्राइवर्स जो महीने के 30,000 35,000, जब करीम नया नया लॉन्च हुआ था तो लोग 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे. Sure. कभी आपने सोचा था कि ड्राइवर्स महीने में 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं और उनको एक सर्टन, क्योंकि No, of course not. Dude. Of DHA course not. में ड्राइवर्स को आप 12-15 हज़ार रुपये देते थे और अपने घर पे रखते थे, यूज टू ट्रीट देम लाइक शिट, और वो Yeah. ही रहते थे 24 घंटे. बट बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक करीम, उन्हीं ड्राइवर्स ने महीने में 1.5 लाख रुपए, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली, गाड़ियाँ ली, चीज़ें ली. Because of platforms like Food Panda, like home-based businesses started flourishing. Then Instagram पे, now it's easy to sell. It's just you have to have the right mindset और आप कोई भी चीज़ घुमा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे platforms मौजूद हैं. Okay, so what's interesting about what you're saying is two things, right? One, I think it's beautiful that you and I look at the same thing, look at chaos, and I want to lament and you want to look at the opportunity. I think Straight that's up. brilliant, right? Yeah, I think that just shows you how different we are, how different, and how, the same thing doesn't have to mean the same event doesn't have to mean the same thing for two different people. Absolutely. I think it was Viktor Frankl or a philosopher who said that the only thing that cannot be taken away from you, the only thing that is inviolable Yeah. to a human being is how to respond to their situation. Straight up, I think यही मतलब क्राइसिस कंट्रोल जो है, अगर हम सीख लेना एज ए सोसाइटी, हालांकि ये हमें एम्बेड होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं शुरू दिन से हम केओस देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं. लेकिन आप देखें उस केओस में भी हम यहाँ तक तो आ गए. अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो. सो मतलब प्रोग्रेस है हमारे मुल्क की, इस तरह नहीं है कि progress nahi hai. The issue is I will say this, the issue is with players like Food Panda. Yeah. Once they establish a monopoly, that's where the problem comes. The problem comes, monopoly establish karna har business ka goal hota hai. Absolutely. I don't want anyone telling me, I don't even want you telling me you don't want a monopoly. Of course everyone wants a monopoly, of course, dude. of course, that's the point. That's basic human nature. Yeah, nothing wrong but about that. The problem is we are not generally aware of our own rights. Straight and here up. when I say we, I mean small business owners, small restaurant owners. Restaurant owners ka ye issue hai ki Food Panda might sometimes charge too much.
right? As a percentage. Yeah. So fight for your rights, dude. You had rights, right? And also, like, as a nation, again, so brands like Food Panda, अगर वो एक जगह जाके पहुंचते हैं, ठीक है, तो अब जो दूसरी कंपनीज जो उनका मोनोपोली तोड़ना चाह रही होती है, तो हम उनको चांस भी नहीं दे रहे होते. आई मीन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप जैसे करीम का भी एक अब ऐप में सारे ऑप्शंस हैं. फ्रॉम करीम ऐप यू कैन ऑर्डर फूड एज वेल. Yes. बट डू यू ऑर्डर फूड थ्रू करीम? No, Food Panda always, Exactly. dude. Yeah. Why? Creatures of habit, Because man. Yeah. वो एक बन गई है. So we're not ready to adapt. That's in driver भी एक आया है ना, Yeah. करीम का नेम बदल. Is वो that good? in driver is pretty decent. I think वो it's cheaper than करीम, क्योंकि उसमें आप बिड कर सकते हो. So अगर कोई चीज़ सस्ती है तो हम शायद अडेप्ट कर लें, कि उसमें मतलब हम इस तरह नहीं करते कि अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं, शायद उसकी सर्विस बेहतर हो. हाँ. हम बस वो एक बना बनाया फार्मूला हमें बस दे दिया है ना, कि अच्छा यहाँ से अच्छा पिज़्ज़ा आता है, यहाँ से, तो हम उसी पे ही पूरी ज़िंदगी गुजारने को तैयार है. एज ए नेशन हम अडेप्ट करने को तैयार नहीं है कि अच्छा ये ट्राई करके देते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते We हैं. are risk averse because we Yeah. have famine mentality as opposed to abundance mentality. बस देख लो bro. यही है. यही है. अब मसला पता पड़ गया ब्रो. अब हल कैसे करेंगे इंशाल्लाह? हल हमें खुद ही करना है. Yeah. आई थिंक कि वही वाली बात है, यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम गोना सस्टेन दिस मॉडल. सो with this model till now I've been injecting my own money, as you saw Yeah. in Morph Karachi. Yeah. There's no sponsor, there's no funding. Bro, no, but there's no funding, there's no sponsor. So it's not only your own money, it's also all of your relationships, man. Absolutely. Like, There's everything on stake. Like, you know, for yahi Hunzaverse mein, matlab that was the first one of its only kind of festival. और उसमें मेरी पूरी ज़िंदगी एक उस पे खड़ी हुई थी कि अगर ये 3 दिन सही गुजर गए तो मैं आगे जा सकता हूँ ज़िंदगी में. अगर ये नहीं गए तो आई एम लाइक डन, डस्टेड. लेकिन वही वाली बात है, नीयत साफ मंजिल आसान. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस सिस्टम में मेरी जो बचत है अपनी, आई थिंक, यू नो, आई डोंट नो कि वही वाली बात है कि आई हैव गॉट हेटर्स. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज you know, I understand people were pretty skeptical about me before I started doing all this, because the kind of stuff that I talk about, the kind of events that I wanted to do, the kind of shit I wanted to do in life, वो लोग बोल रहे होते थे कि ये कैपिटल कहाँ से आएगा इसके पास, क्योंकि हर चीज़ कैपिटल बेस्ड थी और इतना मैसिव एक पूरा सिस्टम में खड़ा करना चाह रहा था. मैं उनको बोल रहा था कि ट्रस्ट मी विद दिस, आई डोंट वांट योर कैपिटल राइट नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट योर ट्रस्ट. So people who trusted me, and you know, I made it happen for them. Alhamdulillah. Like, you know, you were there at Morph Karachi. I was there, man. So but what I'm saying also is for instance, one of the people that helped you with the security aspect of it was Saif Jatoi. yes sir, right? Our own friend. Nah, alhamdulillah. And you know, but again, even him, there was just so much pressure, dude. And that's all I keep saying. I'm like, it's not just resources, it's not just capital, it's also how much. ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. सही. हाँ, so, ये तो एक बात है वैसे. ये cities like Dubai and cities like London, cities like Abu Dhabi, हंसते खेलते निकल जाते हैं. Man, हंसते खेलने का भी बात नहीं है वो. Actually there's a system in place in these countries for entertainment. So government is supporting this sector. Yeah. I mean, right now you see 2020 Expo. What is 2020 Expo? It's a giant event. Yeah. तो उस event के one around, of the biggest in the world. Exactly. और there's so much investment. There's so much crazy things happening. मैं through Hunzaverse और through all these events, पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो लोग मैटर करते हैं उनको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि you know, things like Hunzaverse, अगर if done right, if you give me all the right resources and your help and your finances, I can create something for your country जो सारा कैपिटल आपके पास लेके आएगा. फॉर एग्जांपल अभी जितने भी गोरे ब्लॉगर्स आ रहे हैं हमारे पास, आप उनकी बातें सुनते हैं, अगर उनका फेसबुक कैप्शन या आप, मैं देख रहा था जैसे अभी एक बॉय आया हुआ है, आई थिंक हिज नेम इज़ ड्रू बिंस्की, उसने लिखा हुआ है कि ओ पाकिस्तान इज़ अमेजिंग, देयर सर्विस इज़ नाइस, दे आर नॉट चार्जिंग मी फॉर एनीथिंग, ये वो. ब्रो, अगर आप पैसे नहीं खर्च करोगे तो आपका फ़ायदा क्या? एक मुल्क की इकॉनमी में आप कोई फ़ायदा नहीं दे रहे. और दुनिया में सबसे इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर US वीज़ा और ये वो, या आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रूव टू देयर
system के how you gonna bring so much Absolutely, contribute to the GDP. Exactly. Yeah. ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये गोरे आ रहे हैं बोल रहे हो पाकिस्तान अच्छा है, ये हमसे पैसे नहीं लेते. अगर वो पैसे नहीं लेंगे तो हम अपनी इकॉनमी आगे किस तरह बढ़ाएंगे? So to cover that part, if we start creating our own festivals, our own way where we have major international artists coming in और वो पूरा system बना हुआ है, क्योंकि एक चीज़ वही वाली बात है कि पाकिस्तान is blessed with locations as well. Sure, like dude, there's so much variety from Balochistan to up north, and there's so much to see, different cultures. अच्छा, और again वो जो नाचना गाने की बात कर रहे थे, आप एक चीज़ नोटिस करें, नाचना गाना पूरे सब कॉन्टिनेंट के हर कल्चर में एम्बेड हुआ हुआ है. हाँ bro. तो अगर एक बंदा शलवार कमीज़ में नाच रहा है और एक बंदा जीन्स और टी शर्ट पे नाच रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? कपड़ों का. Bro, और वो everything changes. पता नहीं आपको क्यों? I'm joking. Obviously, I'm joking. Yeah. It's listen, man. I think another paradigm to this stuff is people like yourself, people brands like Rasta, people like Torhan James, right? These people are literally going head to head with international people, right? Straight up. Right? So Turhan opened up for Martin Garrix right now. Think about that for a second, that's man. What an it achievement. hurts my head, man. It hurts my Martin head. Garrix वहाँ का एक top notch EDM artist को open करने एक पाकिस्तानी DJ खड़ा हुआ है. Yeah. So that's again. And Turhan's a young dude. He's not also. He's my age. He's a pretty close friend. Yeah. So I'm super proud of him. माशाल्लाह से. For his achievements, माशाल्लाह के मतलब अब हमारे पास ऐसा talent है. People like Hassan के वो Abdullah Kusumbi, what a producer. What a Man, dude. he hurts my head reshaped the entire industry. आप उसकी हसन का कोई भी ट्रैक उठा के सुने, आप अगर हसन के वोकल्स हटा भी दें, अगर आप सिर्फ ट्रैक भी सुन लेना, it's so nice, it's so well mixed. And I think ये थोड़ा सा mad scientist है. और उसके लिए बहुत आसान है. It's not even an effort for him कि वो बस सुकून से अपने घर पे एक छोटे से so हसन रहीम एक छोटे से कमरे के अंदर से एक इतना बड़ा आर्टिस्ट बना है. ठीक है. और मतलब अभी इस वक्त मैं वही बात कर रहा था कि आपको नहीं चाहिए फैंसी एस स्टूडियोज़, आपको नहीं चाहिए आप हसन की सारी वीडियोस देख लें. वो सारा इसी तरह है कि सारे दोस्तों ने हमने मिलके बनाए हुए. मानू का सीन भी सेम है ना, ज़ैन पीर ज़्यादा. ये सारे बॉयज़ इसी तरह करें अपने गिवन रिसोर्सेज में. दे आर अ ब्रांड राइट नाउ और हम इस ब्रांड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. If nothing else, man, it's super exciting. It's super exciting. It's for the first time in Pakistan कि ये सब हमें अपनी strengths पता चल रही हैं कि through internet ये हो रहा है. समझ रहे हैं कि इमरान खान की पूरी campaign was based around internet only. Sure. So he became prime minister on social media first, then he became the actual prime minister. So you do understand कि मतलब कि इमरान खान जैसा बंदा जो अभी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसने सोशल मीडिया को यूज़ किया. ही इंटरैक्टेड विद द राइट ऑडियंस ऑल द टाइम और उसकी वजह से वो एक सर्टेन पॉइंट पे बैठा हुआ है. सो हम सब ये कर सकते हैं. और मैं भी कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, मैं भी बस यही कर रहा हूँ. In my given resources, देखो, I'm just trying to work it out. So here's the thing, right? Underneath all these technological advancements, underneath all this jargon that we've now and all this technical language that we've used with NFTs and stuff. No, it's not technical at all. But let me say this. Underneath all this, because there is a learning curve, right? Lots of people don't know about NFTs, right? Crypto and all those things. Underneath all this, why I would still argue against what you've just said, आप कुछ खास नहीं कर रहे हो, आप कुछ खास कर रहे हो, because what you're doing, essentially, what society will always reward you for, is taking a risk, right? Yeah, that's it. I think with people like Hassan Rahim, with people like Faiz Shafi, with the stunners, with podcasters and YouTubers and all those things, you are included in all those things. I think society rewards you in whatever parameters for taking risks. Straight up. So देखें ना, इसी तरह डिफाइन होता है कि आप masses का पार्ट बनेंगे या आप उस 1% का पार्ट बनते हैं कि you take risks. Sure. So पूरी दुनिया में इसी तरह ही डिफाइन हुआ है हर चीज़. That's the formula. That's it. कि आपको अगर if you so again with Eventum, it's not that easy. The point that I am at in life right now. Alhamdulillah. तो I mean वही है, when it all started, तो back in 2018
मतलब आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट माई प्रोडक्ट, लाइक आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि ये एक मज़े की चीज़ है, लेकिन वही सोसाइटी के प्रेशर्स, वही जॉब नहीं है और पैसे नहीं बन रहे और घर वाले और ये प्रेशर, आई कमिटेड सुसाइड ट्वाइस थ्रू दैट प्रोसेस. बट again when I got back I was like नहीं यही है, and I started working around it again, and माशाल्लाह वो जो 4-5 साल 6 साल की पूरी जर्नी रही है, now it is taking shape. But देखो यार, again I will say this and I have said this before, you people like yourself are cautionary tales. When people try to become inspired or deem to become inspired by people like you, I warn them against that, because think about feeling something so strongly that you would try to end yourself for it. Man, bro, that's no. It's crazy. It's fucking people are not built like that, man. The average person should not do that. नहीं, because आप सही है, एक फार्मूला बना हुआ है जिंदगी जीने का जिसमें आप रिस्क फ्री जिंदगी जी रहे हैं. नहीं, रिस्क लो, हाँ, इतनी नहीं ब्रो. लेकिन वही वाली बात है कि आप किस पॉइंट तक जाने को तैयार हैं अपनी चीज़ को लेके, मतलब. और बाय द वे इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हर किसी के पास क्वेश्चन नहीं होता. मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगेन थोड़ा सा आई एम श्योर क्वेश्चन था, बिकॉज द काइंड ऑफ स्कूल दैट आई वेंट टू and the kind of communication skills that I develop over the course of time. लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, बेसिक चीज़ों का भी क्वेश्चन नहीं होता, तो उनके लिए वो सेफ फार्मूला ही है. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिस्क ले. जिसको जो फार्मूला समझ आ रहा है अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, वो लेता रहे. अब अगेन द स्ट्रेस इज़ सो क्रेजी ऑन द डे ऑफ द इवेंट, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, राइट. ये 3 साल 4 साल पहले मैंने अपने आप को तकलीफ़ों में भी इसी के लिए डाला हुआ था ना. अब जब ये हो रहा है तो आई कैन नॉट कंप्लेन. what I can do is I can work around it and make it a sustainable model. क्योंकि till now again as I've been injecting my money, because एक पूरा loop है कि ये events profitable इस तरह होते हैं कि once you start getting sponsors, लेकिन sponsors उनके पास आते हैं जो events करते रहते हैं. तो समझ रहे हैं कि एक never ending loop है. तो is there inclinations, are there overtures from sponsors now के कुछ हो सकता है इस दफ़ा? अब वही वाली बात है कि आप अपने सिस्टम पे कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं. अभी करंटली मतलब एज आई टोल्ड यू कि मैं जिस तरह इवेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको मॉर्फ कराची थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. सो बेसिकली कॉन्सर्ट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आपने एक वेन्यू लिया, एक तख्तों से बनाया हुआ स्टेज लगाया, उसके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई और 6-8-10 हज़ार लोग जमा कर लिए और टिकट चार्ज किया. और टिकट सस्ती, अगर 5,000 रख रहे हो तो आपके पास एक नीश आएगा. अगर आप 1,500, 2,000, 2,500 रखो, you'll get the masses. Sure. आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है. लेकिन with my morph and with the way I want to do is I want to design things. You know what I'm saying? So sure. I'm spending more on my designs. I'm not doing basic things. So for example, morph कराची एक warehouse में हुआ, उसमें decor, उसमें containers, वो containers वो decor करते करते ही कोई 18-17 लाख रुपए का खर्चा हुआ था. Good. सही है. और उसके बाद artist जब अब हसन एंड ये जो मेजर आर्टिस्ट हैं इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है. So that's something else that's interesting. You're paying all of them, right? Yes, and there's no favors here. नहीं. Alhamdulillah. That's beautiful. नहीं. Man. That's beautiful. I am trying to like make it a sustainable model for the artist, for the audience, for everyone who's working for me, ताकि उस सिस्टम से सिर्फ मैं फ़ायदा ना उठा रहा. और इसीलिए ये कम्युनिटी माशाल्लाह जो भी हो, it's like it's creating its own market. Alhamdulillah, bro. And that's why I was able to do more Lahore, and then I plan on doing more Islamabad. And in March, I'm doing this big pop-up bazaar / concert in Karachi, Pink Sun. ठीक है. Pink Sun in March. In March, 20th of March. Karachi. Spring Equinox. That's the day where spring officially starts. ठीक है, पूरे system में. तो that's the day. Spring Equinox. Yeah. Pink Sun. What day? It's a Sunday. It's a Sunday. So again वही वाली बात है कि इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए you need brands. For brands you need to show them data कि why should they spend on you, why should they inject their money. तो इसीलिए लोग इवेंट्स करने से डरते हैं कि खुदा न खास्ता एक झटका आ गया तो वो सस्टेन किस तरह कर पाएंगे. और वो झटके मैंने लिए हैं ऑफ कोर्स ज़िंदगी में. लेकिन वही वाली बात है, जो मेजर चीज़ है
वो ये है कि मेरे इवेंट में सब आके खुश होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह जो भी लोग आते हैं, they enjoy the entire time in that event. Everybody is having a wholesome time. So eventually I'll get to the point कि जब ये बड़े ब्रांड्स देखेंगे इसकी पोटेंशियल, क्योंकि पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं, तो उनको समझना, to wrap it around the fact. इंशाल्लाह. तो I'm pretty इंशाल्लाह वो जो नसीब की बात है. हाँ. लेकिन हमारा काम है मेहनत करना. Absolutely. बस And यार. you know what I've been to after parties that have not, मतलब कितनी 200 लोगों की पार्टी that was more problematic than Morph was. Morph was इतना साफ सुथरा कि मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया. I was like, the fuck is going on here, dude? नीयत You know? साफ. Niyat दिल saaf, bro. Yeah. And because the thing is, I also don't like to go to Fair enough. parties and stuff, but it was such a good time. So I don't go to parties anymore, like at all. वैसे हाँ. I am socially very awkward, ठीक है. मुझे एक अरसे तक ये सब करना पड़ा इस पॉइंट तक आने के लिए. हाँ. क्योंकि उस पार्टीज में भी वो फजूल बातें हो रही होती हैं, और वही ब्रो, वही हर सैटरडे वही Breakups, bro. हाँ. और इसीलिए जब मॉर्फ कराची के बाद भी जितनी भी आफ्टर्स थी, मैंने कहा ब्रो मैं घर सोने जा रहा हूँ. और हफ्ते बाद मैं घर से निकला हूँ, और जैसे ही घर से निकला हूँ मेरा पहला वर्ड था मॉर्फ लाहौर. क्योंकि मुझे काम करना है. अभी हम वही बता रहा हूँ ना कि दुनिया में एक ऐसा पॉइंट आया हुआ है कि जो इस वक्त काम करेगा फ्यूचर उसका है इंशाल्लाह. तो बस हम उसमें अब हमारा काम है मेहनत करना. That's it, बाकी dude. अल्लाह पे छोड़ना. That's it. तो Is it so after Alhamdulillah Morph Karachi happened without incident, Allah ka shukr hai, and the artists were happy, the people, the concert goers were happy. yeah. Was it easier to get permissions and all for Morph Lahore? Permissions part is always tricky, ठीक है. Exactly. But it's not as tricky as Sindh right now. Sindh is trickier. Sindh is way trickier, and Lahore और इस्लामाबाद में, पंजाब में, there's a system in place. There's a hierarchy. Yeah, You just ask the right person. Yeah, और वहाँ पे it's not a problem. You just have to show whatever you're doing. It's pretty well designed. Yeah. और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है. हम कराची आपको पता है 3 करोड़ लोगों का शहर है, तो वो अफरा तफरी. और I don't know, I can't help but, because I am Sindhi, I can't help but take that personally. Why are things so difficult? Why is it so much harder to do things here than it is to do it in Lahore's not as nice as Karachi is, bro. वहाँ पे स्मॉग है. अभी आपने इस कमरे को लाहौर बना दिया, लेकिन वो जो है अभी तक नहीं किया. अभी 2 सेकंड किया. ब्रो मुझे मुश्किल हो रही है थोड़ी सी. बस जल्दी आ जाए. जल्दी आ बाबा. और फरहान किधर है? बट एनीवेज उसका जवाब है कि कराची में हमेशा से अनरेस्ट रहा है. वही वाली बात कि हम सिविल वॉर में बड़े हुए हैं. श्योर. तो हम अभी तक अपना इतना बड़ा शहर है कि इसका सिस्टम एक साथ लाना, इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस. श्योर. और लाहौर में इन कराची देखें कि हर कोने पे अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं. लाहौर में 98% सिर्फ एक ही कौम है जो वो वहाँ के लोकल्स हैं, जो कि पंजाब से हैं. ठीक है. सो दे अंडरस्टैंड each other pretty well because they speak the same language. लाहौर में ऑफिशियली पंजाबी खुली बोली जाती है. ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे हम कराची में हम दोनों सिंधी में बात कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा बोलेगा उर्दू में बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही. श्योर. लाहौर में हर कोई पंजाबी में बात कर सकता है. आपको अडेप्ट करना होता है क्योंकि पंजाबी समझ आ जाती है अगर आराम से बोली जाए. सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सिंध में हम 90s से लेके जो ऑपरेशंस और ये और वो और केओस, बहुत इंटेंस रही है हमारी जर्नी. एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ तक आ गए कि ये बात कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और बस अब ज़रूरत लेकिन इस चीज़ की है कि हम जल्दी अडेप्ट करें. क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है. और वो अगर ये सारी चीज़ें जो दुनिया के प्लान्स अभी चल रहे हैं, और इफ़ दे किक ऑफ राइट नाउ, तो वो गैप और बड़ा हो जाएगा. तो हमें जल्दी से अडेप्ट करना है. हमें अभी चीज़ें बैन नहीं करनी, हमें उनको अडेप्ट करके उनको सिखाना है. ताकि इसका बड़ा गोल ये हो सकता है कि अगर क्रिप्टो के थ्रू आपके बिलियनर्स बन गए, तो यू कैन यूज़ देम फॉर योर ओन कंट्री. जैसे इंडिया जैसी इकानमी यूज़ कर रही है अपने बिलियनर्स को, कि वो फिर दे कैन ब्रिंग इन मोर कंपनीज, दे कैन ब्रिंग इन मोर ब्रांड्स, जिसके आपकी इकानमी That's the thing, bro. देखो, the disparity lends itself to
the classes criticizing each other, right? Yeah. So obviously you must have heard this criticism कि जो लोग DHA में रहते हैं वो ना यहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, उनका बाहर भी पैसा लगा हुआ है, right? Okay, well, what are they spending this money on? जो बाहर जा रहा है, they're spending it on good product, right? Straight up. If you put, अब जैसे ये shirt है, Yeah. this is super comfortable, man, you know? Thank you. So if you put this shirt next to a बाहर की shirt and you tell me okay the quality is the same, Yeah. तो मैं पागल थोड़ी हूँ, फिर मैं बोलूँगा हाँ then give me this और one ना. नहीं, जैसे कल परसों हम कुछ अपने बॉयज़ के साथ ही बैठे हुए थे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि ही गॉट दिस पैंट फ्रॉम मेसीज इन यूएस. Okay. तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि मेसीज में भी वो वाले हमसे ही कपड़े लेके जा रहे हैं. हाँ. तो आई वाज लाइक, तो तुम वहाँ से कपड़े लेके वापस इधर ही लेके आ रहे हो. तो वो कह रहा था कि ओ शिट, वहाँ पे तो मैं एसी में एटलीस्ट खरीद रहा हूँ. मतलब वो एक स्टूपिड सी बात थी, लेकिन बात stupid है, लेकिन my argument would be for the people sending it from here. I'm like, my problem is, जैसे अब I think ये लोग, I don't know who's doing it. जीनी जो है is trying, but ठीक है, वो jeans अगर आप यहाँ से quality वहाँ बना के भेज रहे हो ना, क्या, तो फिर यहाँ पे बेचो ना, मैं क्या करूँ? मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, उनकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है. Hire a Faran Bhatti, make your branding good. I don't care, man. I want to buy the best shit Man, if I have the money for it. Again, वही वाली बात है कि एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी. जी, और फारिस. हमारा अभी भी एज अ कंट्री वही वाली बात है कि हम गोरों को देख रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन, एप्पल इज़ नॉट ऑफिशियली इन पाकिस्तान येट. No. वी आर इन द 21st सेंचुरी. 2022 चल रहा है और हमारे पास ऑफिशियली, लेकिन हर किसी के पास आईफोन है. Yeah, bro. तो यू नो दैट्स हाउ सिस्टम वर्क कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वाले देख ही रहे होते हैं कि थर्ड वर्ल्ड को अगर एहसास कमतरी का शिकार रखना है, तो अब वो ऑफिशियली यहाँ पे है भी नहीं, देन स्टिल दे आर मेकिंग सेल्स, क्रेजी सेल्स फ्रॉम दिस रीजन. Ridiculous, man. So, Yeah. Scarcity marketing, yeah? या बट हमने अपना पर्सपेक्टिव खुद ही चेंज करना है, कोई और आके हमें नहीं सिखाने Absolutely वाला. not. और अभी हमारे पास सबके पास रिसोर्सेज भी हैं. इट जस्ट के जो टाइम आप अपने फ़ोन पे इधर उधर की बातें करने में लगा रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी एक घंटा ही निकाल लें ना ये सर्च करने में कि दुनिया में चल क्या रहा है, आई थिंक डेली आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहेगा और एक ना एक दिन आपको समझ आ जाएगी. इंशाल्लाह. हम सब ने भी तो इसी तरह किया है ना, हम सब भी इसी सोसाइटी का पार्ट थे. ठीक है, अगर हम स्कूल अच्छे चले गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी भी कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स इन माय फैमिली डिप, ये वो फलाना ढिमाका, उसके बीच में आई वाज अडैप्टिंग एंड स्टिल आई वाज लाइक यू नो. 2018 में जब मैं आपको बता रहा था कि तब मेरे लिए इतना आसान, मतलब मेरी ज़िंदगी उस पॉइंट पे आ गई थी कि नौकरी करना ही सब कुछ था उस वक्त. और मुझे पता था कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो मेरे अभी 80-90% मसले हल हो जाएंगे. बाय स्टिकिंग टू इवेंटम ओनली मेरे मसले बढ़े हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज अब मेरे पास ज़्यादा प्रेशर है. बट किसी ना किसी को तो रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं तो जाना है हमने, अपनी चीज़ें तो क्रिएट करनी है. तो आई विद दिस इंटायर सिस्टम आई वांट दिस कि ये पूरे पाकिस्तान को हेल्प करे. वही वाली बात है कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स बाहर से, जैसे अगर हम यहाँ के फेस्टिवल्स यहाँ पे करना शुरू करें, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ रेव करें, समझ रहे हैं कि रेव फेस्टिवल्स का मतलब सिर्फ रेव नहीं है. I think you floated the idea of doing क्या कहेगा काजी live at a huge scale as well. Yes. I think you're open to all things. So अगर अब जैसे लेट्स से कि एक फेस्टिवल मैं डिज़ाइन करता हूँ, जो कि मैं अब कर सकता हूँ, जो माशाल्लाह करता हुआ आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दिस इज़ फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स एंड XYZ. अगर लेट्स से अगर हम एक फेस्टिवल डिज़ाइन करते हैं, एंड दिस फॉर द गवर्नमेंट इज़ वेल, जी, कि जिसमें हम ऑफिशियली तौर पे मेजर आर्टिस्ट, गवर्नमेंट को बजट प्रॉब्लम्स तो है नहीं, ठीक है, अगर हम बड़े आर्टिस्ट लेके आते हैं, ठीक है, और एक पूरा फेस्टिवल क्यूरेट करते हैं, और जिस तरह हम यहाँ से उठ के दुबई, कतर और थाईलैंड जा रहे होते हैं मरून 5 को सुनने के लिए, इन लोगों को सुनने के लिए, अगर लेट्स से नॉट मरून 5, आई गेट इट कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर से म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट लाना शुरू करें और फेस्टिवल क्यूरेट करें, तो जो लोग दुबई जा रहे हैं, अब आप उनको टारगेट करो कि आप आओ हमारे पास और हम आपको दुनिया के सबसे क्रेज़ी पहाड़ों में एक म्यूज़िकल फेस्टिवल दिखाते हैं, जो कि आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर पे बेस करता है. और आप फिर देखो, बिकॉज वो एक प्रोडक्ट बनेगा, जो उससे और प्रोडक्ट्स बनेंगे, उससे और प्रोडक्ट्स. हो जैसे अब एक सर्कल, एक यूट्यूब चैनल है जो करता क्या है कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के टूरिज़म डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करता है, और वो वहाँ उनके कंट्री में जाके
और उनके किसी खास हिस्टोरिक प्लेस पे एक सेट रिकॉर्ड करता है. That's beautiful. एंड देन दैट सेट्स गेट वायरल बिकॉज वो एक आर्टिस्ट, इट्स अ सेफ फार्मूला. और बस प्रोडक्शन अच्छी होती है. ब्रो हमारे पास जो लोकेशंस हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है. I think Lahoti is doing that. No? मैन लाहौती अगेन इट्स सिंध बेस्ड ओनली, Yeah, ठीक है, एंड इट्स जामशोरो बेस्ड Yeah, ओनली. के और अगेन यो सी, it's not only about doing festivals, it's about getting the right audience to your festival. समझ रहे हैं, जैसे बिलबोर्ड अगर रोड पे लगा हुआ है और 90% ऑडियंस वो देख रही है जिनका पैम्पर से कोई लेना देना नहीं है, तो उस बिलबोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है. तभी डिजिटल मार्केटिंग होना शुरू हुई है. तो सिर्फ फेस्टिवल करना इज़ नॉट एवरीथिंग. गेटिंग द राइट ऑडियंस टू योर इवेंट is the entire game. Sure. So that creates an impact. अगर मॉर्फ कराची में अगर हम सिर्फ लड़के भर देते या सिर्फ रैंडम लोगों को टिकट्स दे रहे होते हैं, खुदा की कसम है मैं नहीं आता. तो exactly, तो I would have been like sorry for you know what I'm saying. तो Sorry. getting the right audience is the entire game. Yeah. क्यूरेट करना फिट सीन है, लेकिन राइट नाउ माशाल्लाह with this entire system I can say कि I have my own set of audience as a platform, as Eventum platform in Karachi, Lahore, Islamabad and in Hunza. I've done events throughout Pakistan in this 1 year. Yeah. Started from Balochistan, हसन रहीम का कॉन्सर्ट किया था हमने बलोचिस्तान में. उसके बाद फिर हमने कराची में एक गिग करवाई थी. Then we did Hunzaverse, then we did Morph Karachi, Morph Lahore में फिर किया था. मतलब आप समझ रहे हैं. So what's next? Next is Morph Islamabad. Inshallah. And then there's Pink Sun. And एक Pink और, Sun is here. Yeah, and मैं एक और फेस्टिवल क्रिएट कर रहा हूँ. I have designed it already. I am just waiting for the right permissions. Okay. और फिर Please permissions. इंशाल्लाह. और मैं जो परमिशंस दे रहे हैं उनको भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि पैसे बनाना सबका हक है. I get it. बट मैं आपको बहुत legit तरीके से पैसे बना के दे सकता हूँ जो बड़े पैसे हैं. छोटे डंडियों से कुछ नहीं होगा. या अगर आपने पैसे बनाने तो आए ना, 7 बड़े पैसे बनाते 7. या मैं थक गया. फरहान भट्टी 2022 बड़े पैसे 7 बनाते हैं. हाँ अगेन सी my products is they're entirely based around others, ठीक है. It's not अगर मैं सॉर्ट हूँ और मैं ऐसे experiences और create करता हूँ, so I'm giving back to the society through my platform. Bro, I think you're fucking important, man. I'm just trying. That's all anyone's ever asked you to do, no? No one's ever asked you to, like, there's no guarantees in life, but I think people like yourself are super important because you're tinkerers, right? I said this, I've alluded to this earlier in the conversation. There's people like me who live in the past. Right? There's no moral judgment here, but that's what it is, right? How it is. And then there's other people who just live in the future, and I think it's super important. Lighter आपका नीचे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं है. एक और भी है. Oh, why do you have 2, bro? Bro, क्योंकि एक नीचे गिर जाता है. उठा लो. मैं full cool, अपने आप को cool महसूस कर रहा था. That's Mohammed Ali Jinnah, ना? He just whips out another cigar. He's like, मैं तो नहीं झुक रहा. हाँ bro, yeah. मसला नहीं है, bro. देख ले. Anyhow, dude, I think that's fantastic, man. I hope it works out, man. Inshallah. And see, that's what I said last time as well, dude. I just think you're fucking crazy, man. Bro, यही है. और कोई ऑप्शन नहीं है. अब माशाल्लाह इतना दूर आ गया हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब जो है मैं उसको बनाना चाहता हूँ. That's the goal. और मैंने अब उसको पेपर पे उतार के फिजिकली भी प्रूव कर दिया है कि whatever I want to do, if I get the right people by my side, ठीक है, if I get the government by my side, I can create crazy experiences for Pakistan only, which can help this country. And that's how I want to serve my country. You know what I'm saying? कि ज़रूरी नहीं है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ या मैं भी फौज में जाऊँ. We all have our own strengths, right? लेकिन अगर इस तरह, I think if I can serve my country in a better way, कि by creating experiences which will attract goras. And because let's be honest, dude, you'd make a shitty soldier. I mean, I'm sorry, I think border पे खड़े हो गए ना हम. I'm sorry, dude. I think you would have been India के साथ में नाच रहा होता. You would have been kicked out really quickly, I think. नहीं, I think यहाँ तो मैं वागा पे full dance challenge हो रहा होता. अल्लाह रहम करे, bro. मैं बता रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि because I've considered this. Now I've been like, okay, you know what would my life had been like if I had just joined the army? And I think about it for a little bit. I'm like,
Do you realize how difficult it is, bro? It's intense. Bro, नहीं, You need discipline. नहीं हो सकता, bro. नहीं हो, I don't think हो सकता. सिंधियों का Bro, काम ही नहीं है आर्मी वार्मी. यार नहीं ऐसा नहीं है. हमारा काम नहीं है, bro. Don't get. हाथ मत करे. हाथ मत है, bro. हाथ मत है. पूरे सिंध को नहीं. हाथ मत है. And that's okay. You know, course, us dude. as a com, हम लोग chill out काम है, तो Okay, best yeah. है. What's the ये- problem there? There's no problem there. Culture हमसे Hey, hang out, bro. It's fine. scene on है. Char pies and shit, dude. Exactly. What are you gonna do? हुक्का पीते हैं, गाँव चलते हैं. लेकिन हुक्का जो है अभी तक बैंड है ना कराची में. yeah. हुक्का मतलब शीशा. Why? Because I mean, you're fucking, you're No. killing me with this cigarette. No, Right. I'll tell you why. हाँ. Because शीशा इंडस्ट्री पे टैक्सेशन नहीं हो सकती किसी तरह की. वो Yes. वो शीशा फ्लेवर्स और ये वो जिस Yes. तरह वो बनते हैं. और अगेन एज हमारा ये मसला भी है ना, तो अगर बाहर से फ्लेवर्स आ रहे हैं या कुछ चल रहा है तो हम उसका एक सस्ता कॉपी बनाते हैं जो बोलते हैं ये अब हमारा वाला कॉपी खतरनाक होता है ना. तो Exactly. हम It's लोग dangerous, dude. Yeah. Yeah. So, लेकिन आप मिडल ईस्ट में देखें, मतलब इन दुबई आपको 200, 300, 400 दरम का भी शीशा मिलता है, मतलब एक रात में पीने के And लिए. what's the difference? Man, it's the same shisha. It's just they're making crazy money. They've made it part of their culture and they own it. कि हर गली कैफ़े, मतलब दुबई में JBR पे crazy कैफ़ेज़ हैं जो 300 दरम, 400 दरम, 500 दरम का शीशा दे रहे हैं. I think Indonesia recently legalized weed, na? Indonesia? Thailand. Yeah. हमने भी भांग Bhang to kar diya. हाँ, हाँ. yeah. But that's the thing, man. You know, if you keep if you don't legalize these things, you cannot incorporate them. You cannot standardize it. You cannot incorporate it into your GDP. And I think that's a crying shame because these are huge industries here. मैन वही वाली बात है कि स्ट्रेंथ्स देखने को तैयार नहीं हम, और दुनिया कहाँ जा रही है ये देखने को तैयार नहीं हम, और हम बस अपने उस पुराने बबल में ही फंसे हुए हैं कि वो ये सही है ये गलत है. मैं वही बता रहा हूँ ना कि कॉन्सर्ट में अगर एक बंदा जीन्स और टी शर्ट पहन के अगर डांस कर रहा है, या आप उसी तरह हमारा सिंधी कल्चर में झूमर और हो जमालो ये पूरा डांस ट्रैक्स बने हुए हैं. बलोची कल्चर में दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल Yes, डांसेस, of course. हुंजाई कल्चर, Yeah. पंजाब, तो ये सब है, you know, और ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, ये सब हमारा ही पार्ट है, हमारे कल्चर का पार्ट है. अगर एक बंदा कोई और कपड़े पहन के कर रहा है तो ख़राब नहीं है ये, हम खामखा डार्क नहीं कर सकते चीज़ों को. हम टेक इट लिटिल इजी ऑन आवरसेल्व्स, लाइक वी नीड टू लाइक काम डाउन. और हर चीज़ इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकती कि बस यही है. हर एक कामयाब माशरे में एंटरटेनमेंट का एक पूरा सेक्टर है. आई थिंक इट्स अ सदका जारिया कि अगर आप एक इंसान लाइक फॉर एग्जांपल कि एक इंसान तकलीफ़ों में है, सही है, मेंटली स्ट्रेस में, मेंटल हेल्थ उसकी तबाह हुई हुई है, और अगर उसको मैं उधर से निकाल के एक दिन एंटरटेनमेंट का दे सकूं कि जिसमें वो इजी रहे और वो खुश महसूस करे और वो उसका बर्डन, इससे बड़ा आई थिंक अच्छा काम क्या होगा. क्योंकि हर कोई तो तकलीफ़ बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है ना. आप एक सर्टेन एक्सचेंज में कि जिससे मैं वही बता रहा हूँ अभी तक, this entire system is based around brands. I don't have brands. Still, I'm doing it. And still, I'm going all in for it. Well, bro, देखो ना, here's the problem. There's certain brands you can't take on board. You've obviously relegated yourself to not take clothing brands because you've created your own. Right. Not necessary. So again, with this system, what I'm trying to prove to the brands, if you're getting your merch designed through me, you'll get cool as designs. You're not getting basic merch for the concert. You know what I'm saying? So this first volume is Pasu Cones, by the way, because that's what I did Hunsa verse. That's all, dude. I like it, man. Yeah, and there's a boarding pass printed on your back. अगर आप पीछे भी दिखाएंगे तो पीछे भी printed. दिखाना ब्रो, बैठो ना. हाँ, कर लगेगा. Okay. कि कैमरा को भी. So लेकिन यही है कि ब्रांड्स को भी मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी जेब से अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल के एक इतनी फिट चीज़ खड़ा कर सकता हूँ, if you inject the right money in the right product, and वो जो आप ट्रेडिशनली करते हुए आए हो ना पुराने ओल्ड स्कूल कॉन्सर्ट्स, छोड़ें अब फ्यूचर का टाइम है. How much would you charge for a shirt like this? I think I'll charge 3,500 to 4K. I think that's reasonable. Yeah, it comes with okay, this is not it. Okay. So with every shirt, you'll get a stick-on, एक sticker type, एक not sticker embedded patch आएगा. उसके साथ morph code,
just because I own a tour company and the kind of access that I have over throughout Pakistan. So if you're wearing Morph code or if you own Morph code, so you'll get a card. So वो card you can work as a loyalty card. What? Anywhere in Pakistan. Let's say you're in Chitral और आपको एक अच्छे होटल में discount चाहिए तो you can show that card. That's ridiculous. If let's say if you're going to Xander's or any other restaurant, you show that card. So it's a loyalty card, comes with a brand. So ये brand value के लिए है. कोई कॉपी ना करे प्लीज ब्रो. हाँ, क्यों बोल दिया आपने? मैं खैर हो गई ब्रो. और कोई कर ले, लेकिन बात है सारी आप जिस तरह कर रहे हो. सच अ रॉक ब्रो, है ना? नुसरत फतेह अली खान, सच अ रॉक. बिकॉज दे वो था ना, उनने दम मस्त मस्त गाया था, फिर उनने तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गाया था इंडियंस ने. तो तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त कम ऑन ना करने आप दम मस्त कर. सो ये दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन एंड दिस इज द गोल कि पाकिस्तान के हर मेजर टूरिज़म डेस्टिनेशन पे एक नए किस्म के इवेंट्स, नई किस्म की चीज़ें हों, ताकि हम राइट ऑडियंस को लेके आएँ जो पैसे खर्च करते हैं, तो हमारी जीडीपी में उसकी सही वैल्यू हो इंशाल्लाह ब्रो. और फिर इन मेजर सिटीज़ वी क्रिएट एंटरटेनमेंट सिस्टम, गिग्स, ताकि लोग एक दिन सैटरडे संडे अपनी स्ट्रेस को छोड़ के सुकून से आके बैठे हैं, फैमिलीज आके बैठे हैं, हैव अ गुड टाइम, दे शुड हैव अ गुड टाइम एंड दे शुड गो बैक होम. That's it, dude. Yeah. I think that's a beautiful thought, man. अगर यही चीज़ मैं अगर यूरोप में या दुबई में कर रहा होता तो उनकी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही होती. Absolutely, dude. आपको जो अगर आप ये ना भी कर रहे होते ना, वैसे भी आपको सपोर्ट कर रही होती. लाइक आयरलैंड रिसेंटली अनाउंस्ड कि वो आर्टिस्ट को स्टिपेंड्स देंगे per month to make music, Yeah, dude. to do stuff. You know what I'm saying? It's just a different world, man. वहाँ पे you get, I don't know, you get 50,000 followers on YouTube, you're sorted. Yeah, that's your career. And see again, ऐसा नहीं है कि उनकी सोसाइटी में मसले नहीं हैं. हम हमेशा एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं, वो उनकी सोसाइटी में मसले नहीं है. सबकी सोसाइटी में मसले हैं. It's just how they deal with it, how they want to get out of it. And with these kind of brands and these kind of festivals, they make minting money. Like 100%, it's good for their GDP as well. Of course, dude. और हमारे कल्चर में हर सूबे का अलग अलग कल्चरल म्यूजिक डांस सीन है, तो boys, okay, it's part of our scene. So here's another thing, right? Would you be open to having regional artists at Morph? Of course. So in Morph Lahore, I had this guy, his name is Zahoor, he's a new artist. वो पश्तो R&B बना रहा है और उसने पश्तो में गाना गाया है. So even in Hunza verse, day 1 was dedicated to the local music of GB. और वहाँ पे 3 बैंड्स आए थे और जो वहीं के बैंड्स हैं, शमूल है, सोहेल रूमी है. अगर मैं दिखाऊं कि वो लोग उन्होंने अपने स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं इन बॉयज़ ने हुंजा में, सोस्त में, और वो वहाँ से क्रेज़ी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर उनको इफ़ यू गिव देम द राइट डायरेक्शन राइट नाउ, आई थिंक दे कैन एक्सेल लाइक एनीथिंग. पीपल लाइक अब्दुल्ला कसुम्बी जो अपने कमरों से बैठ के कर रहे हैं. इवन द यंगस्टर्स बॉयज़, अब इनको 10-12 साल लगे हैं टू दिस पॉइंट. इनकी जर्नी मेरे सामने शुरू हुई थी. तला अंजुम को आई नो हिम. और आई मीन उनके जितने भी प्रोड्यूसर, उनकी आप पहला गाना सुने बर्गर कराची, और जो अभी उनके नए गाने आ रहे हैं, दे जस्ट डिड अ एंथम फॉर पबजी और समथिंग. मतलब that's very well produced, the beats and everything, so they've come a long way माशाल्लाह से. if given a chance, पाकिस्तान में अगर हम ये, लेकिन देखें यंगस्टर्स, हसन रहीम, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत रेयर हैं पाकिस्तान में. तो हर किसी को चांस जो बस सस्टेन कर जाए अपने आप को, वरना मेजरली लोगों की टांगें खींच ली जाती हैं. टांगें ना खींचें, सबको मौका दें. मतलब पता नहीं क्यों तकलीफ होती है हमें किसी और को ग्रो होते हुए देखते हुए. एहसास कमतरी है ना. There's so many fractures in our society, in our psyche. I think it's just that. I think we need to we never healed from our history of violence. Straight up. Yeah. Because we never came to terms. Abhi jaise, for instance, recently when I saw the news about MQM, what was actually triggered in me? It was a response to fear. I was terrified. I was like, are these guys coming back? Like, what? Encore? No, dude. No. I'm not ready for this, right? I let him go, bro. वही बात है कि कहाँ किस टेंजेंट पे हम जाना चाह रहे हैं. इस वक्त हमारे पास वक्त है सही चीज़ें करने का.
अगर सही चीज़ें कर ली हमने तो हम आगे के लिए सॉर्टेड है। Yeah. अगर ऐसे ही उलझते रहे हम अपने ही लोगों में, अपने ही चीज़ों में, फिर हम कंप्लेन करते हैं ओ जी पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो रहा और हम कहीं नहीं जा रहे, इंडियंस यहाँ, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। That's it. और हमारे वाले एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अब That's आप बताएं, जावेद इकबाल जो मूवी बैन हुई है, Yeah. ठीक है, Yeah. अब इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब Dude, they're pushing boundaries, dude. They're doing such God outlandish damn. shit. They're doing such outlandish shit कि आप बोलते हो यार आप लोगों को मरना है, आप क्या कर रहे हो? और हम सबको साथ ही आज़ादी मिली थी ना उनको, और हम एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे। Yeah. तो मतलब हम पहले दूसरों को कंपेयर करते हैं कि ओ ये, और हम अपने आर्टिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, हम अपने लोगों का पहले मजाक उड़ाते हैं। वही वाली बात है कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, बिफोर आई स्टार्ट डूइंग ऑल दिस, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आई वांट टू डू दिस, यू नो, यू शुड गिव मी सम इनपुट, तो वो मुंह पे तो शायद सुन लेते थे बात, 5 मिनट बाद मजाक उड़ा रहे होते थे कि पागल है, क्या सोच रहा है। Well, देखो, to be fair, and I said this before as well, your ideas were but are still outlandish, and so I suppose if it would be unreasonable if everyone was just supportive, it was like हाँ हो जाएगा, because it's so crazy, you know. मैन इट्स नॉट क्रेजी एट ऑल। समझ रहे हैं कि ये जो whatever सिस्टम ये दुनिया में प्लेस हुआ हुआ है हर जगह, ये जस्ट हमारे पास नहीं है। Sure. ठीक है, कि मतलब यूएस में, इंग्लैंड में, यूरोप में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बाली, ये जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, ये इधर इनके अराउंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ब्रांड्स, इवेंट्स काम कर रहे हैं जो इनकी जीडीपी पे मेजर सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब स्क्रू एवरीवन एल्स राइट नाउ। सऊदी अरेबिया, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। सो सऊदी अरेबिया में अभी एक फेस्टिवल हुआ है, 3-day फेस्टिवल, 7.5 लाख लोगों की अटेंडेंस थी। अगर आप उसकी टिकट प्राइसिंग देख लें, वो उसमें अगर आप आर्टिस्ट लाइनअप देख लें, गॉड डैम, कौन? everyone you name it, के ब्लैक कॉफ़ी, लेसो, मतलब, और मतलब उनका रोस्टर इतना बड़ा था। एंड 3-4 साल पहले when they launched it, so entire Bollywood was there. Who would have imagined के Saudi Arabia of all people, man, of so all they have places. created a city around a festival. So मतलब आप देख रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब रियासत मदीना कहाँ जा रही है। Yeah. सो अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके सही तरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं, व्हाई नॉट अस। Yeah, man. और कोई भी नहीं कह रहा कि आप इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स करें, आप आराम से एक, क्योंकि देखें एज ए ह्यूमन, अगर आप हफ्ते में 5-6 दिन काम कर रहे हैं और आपके पास सैटरडे संडे को क्या होता है करने को, खाना खाने के अलावा सारी ज़िंदगी खाना खाते रहेंगे। मतलब पाकिस्तान में हर चीज़ खाने के अराउंड रिवॉल्व करे, तो क्यों है ये, क्यों? और फिर जब इन लोगों का गुस्सा कहीं नहीं निकल रहा, इन लोगों की रेज कहीं नहीं निकल रही, तो फिर ये माशरे में जाके फिर तबाहियाँ ही कर रहे हैं, यू नो। तो ऐसे एवेन्यूज़ दुनिया भर में बनते ही इसीलिए हैं कि अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो तो 2 दिन की इंटरटेनमेंट आपके पास हो, ताकि वो आप अपनी पूरी रेज निकालो, आप ईजी हो, फिर आप सिस्टम में वापस आके फिट हो, जिस तरह लोग पूरी दुनिया में करते हुए आए हैं, यही होता है, राइट? Sure. तो हमें भी द वेयर वी आर लैकिंग राइट नाउ इज़ अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, Is a release, dude. Yeah. Is a release. So अगर वो हमारे सोसाइटी में आ जाए तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो सकते हैं हमारे, Inshallah. कि So now you're going to solve all your societal problems through music. yes, I mean, so Yasir Arafat, जब वो आई थिंक ही वाज इन कोमा, तो the only thing that worked was the music therapy. Bro, no. Obviously, there's science behind this. Yeah. I don't mean to be, condescending or anything. I'm just joking. yeah, Yeah. मतलब कि I'm just like adding a fact to it कि Yeah. मतलब यासिर अरफात मुस्लिम दुनिया का लीडर था, Yeah. उस पे म्यूजिक थेरेपी अप्लाई हो रही थी, समझ रहे हो? So he's just like, yes, ये yes, I'm coming back, bro. That's what, bro. He's just like, yes. तो Absolutely. मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, I think ठीक so, है? ज़रूरी नहीं है कि ये कोई भी कॉन्सर्ट कल्चर में बस नाच गाना हो रहा है, या मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यो, और नाच गाना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। Bro, listen. देखो, वो तो it's again moral judgments to one side. How are you going to convince me कि Faraz dedicating that song or that performance to a deceased fan wasn't one of the most wholesome things you've ever seen? Absolutely, right? Like it was just, and the thing is, there was a feeling of community there. कि यार, this is no longer a lot of people enjoying
content from their favorite artist. It Yeah. was all of us were partaking in the eulogy of a person, man. Yeah. You think, I mean, and there's all sorts of ways to do it. Sure, you could make a video or whatever else, but this is just one of those ways of doing it. It was it's wholesome. like interacting directly to your masses. For example, Morph Lahore की वीडियो फारिस की वायरल हुई हुई है. उसमें फारिस गाना गाना शुरू करता, सब गाना शुरू करते थे और फारिस रुक जाता था लेकिन सब गा रहे होते थे. Yeah. So I mean, that was beautiful. It like is beautiful, that's like crazy. And also, dude, a word on Faris. Think about how long he's been in the trenches. Man, One of the 12 best. years. Huh. Same 12 years. His first track came back in 2011, I think. Awam. And I've been following him since then only. I've been his fan 101. Awam. Us Faris ke sare gaane rate hue. Yeah. Or Morph Karachi, I got a chance to sit right next to him and sing awesome. his track. So अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे बोलते हैं कि नहीं ये करना चाहिए बिकॉज ये होलसम है और इससे बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे लोगों के मतलब वो थोड़ी देर के लिए ईजी होना और लोगों को खुश देखना दैट्स लाइक right now that's helping me to sustain this just by the way. Yeah. Like the entire goal के मतलब मुझे क्या मिल रहा है इसमें से और बार बार करने से और पैसे भी नहीं बना रहा कुछ भी नहीं कर रहा पागल है ये लेकिन इन लोगों को खुश होते हुए देख के थोड़ा इजी होते हुए देख के वो एक अच्छी फीलिंग आती है कि everyone is having a good time because of the product that I created. I think one of the worst things that we've kind of inculcated in ourselves is this thought that money is ever the goal. Dude, money is a byproduct. Money is a consequence. Man, if you master the art, money will come itself. Absolutely. Excellence is the goal. You can be excellent at whatever, dude, and get paid. Straight up. Straight up. There's people that are excellent at, I don't know. Just by making TikToks. Right? That's it, dude. And they're making paid. crazy money. Yes. Imagine that. Yes, man. So, matlab, it's not about कि आप क्या कर रहे हो अगर आप सही से कर रहे हो I mean the money part will come inshallah Bro, वो तो देखो एक वैसे भी ना if you're Muslim you understand risk लिखा हुआ है straight up लेकिन बात यह है कि हमारे पास ये बातें हमें पढ़ाई गई हैं कि वो रिस्क लिखा गया है लेकिन कोई इस पे मानने को तैयार नहीं है ब्रो स्ट्रेट अप मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ अभी हफ्ता 10 दिन पहले वी वर डूइंग अ कॉन्सर्ट इन इस्लामाबाद कि फॉर द वुमेन ऑफ GB वी वर रेजिंग फंड्स फॉर देम ठीक है सो अब मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से कराची की और मैं लेट हो गया था तो आई कॉल्ड करीम और मैं एयरपोर्ट से काफ़ी दूर रह रहा था सो जब अब करीम वाला आया है उसने मुझसे टेक्स्ट पे बोला है कि मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊँगा राइड कैंसिल कर दें आज लाइक ब्रो मेरे पास कम टाइम है आप क्यों नहीं जाओगे इज़ लाइक 800 रुपये लिखे हुआ है फेयर और मैं वहाँ से खाली आऊँगा और ये होगा मुझसे नहीं होगा फिर उसने करा के ही क्रैक्ड अ डील विद मी कि अच्छा आप मुझे 1200 रुपये दे दें मैं आ जाऊँगा आज लाइक ब्रो आ जा बिकॉज उसको अगर मैं 400 रुपये ऊपर नहीं दूंगा तो मेरी 18,000 की फ़्लाइट चली जाएगी ठीक है उसके लिए वो सिर्फ 400 रुपये थे खैर वो आया है उसने आते ही साथ पहली बात ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैं आपसे पैसे इसलिए मांग रहा था क्योंकि एयरपोर्ट से हम खाली आते हैं एयरपोर्ट दूर है आज लाइक प्रो तुम्हें कैसे पता था कि तुम खाली आओगे मतलब तो तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट पे यकीन रखते ही नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा और ये देगा आज लाइक एयरपोर्ट पे तो फ़्लाइटें उतरती हैं आते जाते रहते हैं लोग शायद तुम्हें उसी वक्त इंस्टेंट राइड मिल जाए वो कह रहे हैं नहीं वो आज लाइक bro, this is the thing this is what distinguishes most people wouldn't have that argument with the Kareem driver they just be like dude just fucking take me to the flight you're just over here trying to explain to him Islamic metaphysics you're just like listen man उसने ट्रिगर किया वो he's like listen man आज लाइक फिर मैंने उसको ये समझाया कि आज लाइक ब्रो तू सिर्फ 400 रुपये के लिए अगले की 18,000 का नुकसान करने के लिए तैयार था तो तुम में अच्छा लग रहा है ये सब के नहीं वो फिर उसने कहा अच्छा चलिए जाने देना and then you're like okay I win just remember I won और वो यही हुआ हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और क्रेजी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरी हुई थी उसको मुझसे उतारने से पहले ही राइड मिल गई आज लाइक ब्रो तवक्कल एक चीज़ है और तवक्कल अगर रखो तवक्कल एक्चुअली ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम के और अगर आप इस पे मानने पे आओ तो आप ज़िंदगी में थोड़ा ईजी हो जाओगे वरना अगर आप मानोगे नहीं I think देखो मानो ना मानो don't talk shit about it and don't try and force it on other people man when you're not adhering to it true all right buddy this has been great yeah right yes sir. Anything else that you want to talk about
I think you're sorted for this one. Yes sir. हाँ, I think we're good to go. अगर अगले 2-3 महीनों में अल्लाह खैर करे फिर से करेंगे इंशाल्लाह. नहीं, अगले 3 महीने में इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा चुके होंगे. Okay. सब मिलके साथ. Inshallah. So at this point right now, whatever I've created, it's out there in the market. Right now I need prayers and luck by my side to, you know, जो भी product बना हुआ है वो उस पे we get the right brands, right attraction to it. इंशाल्लाह. And you know, ज़रूरत इस बात की भी है कि next time if you're going to any event तो बस ये सोच लें कि it's not a giant party. We are responsible for everything our own self. कि मतलब हमारे अपनी ज़ात की वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो रही हो तो फिर उस तकलीफ़ का एक रिपल इफ़ेक्ट ये होगा कि वो किसी और को तकलीफ़ देंगे और वो तकलीफ़ घूमते घूमते वो मेरे पे आएगी और वो पूरे सिस्टम पे आएगी और सब तबाह हुए होंगे. नहीं करें, इतना डार्क नहीं हुए. प्लीज़ फरहान को तकलीफ ना दें. किसी को भी तकलीफ़ ना दें. किसी को भी तकलीफ ना दें. लेकिन फिर क्योंकि वो तकलीफ ना दें. हाँ, फिर वो फरहान के ऊपर जाएगी. बोला क्या है? हाँ, तो बॉस अल्लाह रहम करे ब्रो. बस मैंने किया क्या? अरे यार अल्लाह रहम करेगा ब्रो. Anyways, dude, always a pleasure to sit down with you. And you know, I was impressed the first time. I'm impressed this time. I hope you keep going, dude. I hope you keep going at 100 miles an hour. Thank you. Allah आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह. Ameen. Oh, dude, please, Instagram and all those things. I fucking forget every time. My Instagram, so Faran Khan, FARAAN. Bro, morph code का. Morph code का पता है सबको. अच्छा. Morph code is morph code. Morph code का पता है सबको. वरना मेरे प्रोफाइल पे आ जाए, morph code पे चले आएगा. इनके Follow me profile right now. जी, please. इनके प्रोफाइल पे भी आ जाए. Yeah, like, share, subscribe, give prayers. Yeah. Faran Bhatti, Kazi Akbar. Assalamu alaikum. Walaikum salam.